Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start our new chapter number 18, Animals Are Useful. So students, you have already learned about the different animals in our previous chapter, animals around us. So in that chapter we have already seen how animals protect themselves by taking shelters, isn't it? Then we have already also learned about the different movement of the animals, that is from one place to another place, which are the organs they are using. We have also seen the different habits or food habits of the animals. Then we have also learned about the young ones of animals. Now in this chapter we will learn about the usefulness of animals. That is how animals are useful to us, that is to human being. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल किस तरह से हमें यूज में आते हैं. ठीक है, तो पीपल जो है, जैसे हमारा मानव जाति है, वो किस तरह से एनिमल्स का यूज करते हैं. ओके, सो let us see which are the various uses that animals give, from animals we get. Okay, so in your chapter it is said that buffaloes, cows, donkeys, goats, camels and horses are some of the animals we keep on farms. Some people also keep them in backyard of their homes. They are called domestic animals. They help us in many ways and are very useful. So we have already learned about domestic animals and pet animals in our previous chapter. Domestic animals are the animals which are kept in the farms. Okay, and pet animals are the animals which we keep at home. So you know that people keep domestic animals because they help us in many ways. Now let us see what are the different things the animal gives us. Okay, so first is your animal gives us food. So from food you will certainly think about milk, isn't it? So from animals we get milk, and from milk we get various types of milk products. So आप देख सकते हैं यहाँ पर the animals which give you milk is shown, that is buffalo, cow, goat. From these animals we get milk. So as we get milk, the milk itself is used for drinking purpose. Milk हमारे पीने के काम में आता है, और इसके अलावा मिल्क के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हम हमारे फूड के तौर पर लेते हैं. सो वी टेक many different dairy products as our food. Okay, so let us see which are the different dairy products which are made up of milk. So you can see the curd, the dahi, then cheese what you sprinkle in your pizza, isn't it? Then butter, you are also consuming butter. आप butter भी लेते हो. So cheese, curd, butter, these are all your milk products. Along with this you can have ghee, then khoa, then cream. So these are the other products which you get from milk.
सो खोआ इज यूज टू मेक स्वीट्स. ये जो खोआ है ना, ये स्वीट्स बनाने के काम में आता है. एंड दिस घी, that also you know that you have ghee when you are having your meals, isn't it? So you can see so many things can be made from milk, and milk is given by these animals. So if animals were not there, we were not able to have milk as well as these all tasty things, isn't it? सो यदि ये एनिमल्स हमें मिल्क नहीं देती तो हमें ये सब टेस्टी थिंग्स भी खाने को नहीं मिलता. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ एनिमल गिव्स अस मिल्क. ओके, नाउ सेकेंडली you can see that some of the birds we know, that is hens and ducks, they give us eggs, isn't it? So egg is also a very very useful thing that we get from animals. So egg is a protein rich thing. ठीक है, एग को हमें रोज़ लेना चाहिए क्योंकि ये एक प्रोटीन रिच है. और जब भी कोई बीमार पड़ता है, whenever someone is sick or ill, they should take egg so that they can recover quickly. ओके, तो कोई भी पेशेंट यदि है वो बहुत बीमार है तो उन्हें एग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन प्रोडक्ट है और इससे क्या होता है, जो पेशेंट रहते हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं. ठीक है, सो एग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम hen, duck and geese. Okay, so you can see the goose. Okay, ये देखिए, ये डक होते हैं वाइट कलर के, और ये वाले देखिए गूज होते हैं इस तरह से. ठीक है, तो आप जब गांव जाते हो तो आपने देखा होगा. और hen तो you know. Now from eggs also you can prepare so many delicious things. egg से भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें बना सकते हैं. सबसे पहले तो आप एग, अपना जो एग करी हम लेते हैं, फिर बॉयल एग लेते हैं, ऑमलेट लेते हैं, तो ये सब चीज़ें वैसे ही टेस्टी है. और उसके अलावा यू कैन यूज़ योर एग्स फॉर मेकिंग पेस्ट्रीज एंड केक्स. Okay, so cake and pastry are also made up of cake, and omelette, so you know that it is also very tasty. Okay, now you can see the honeybees are there, which are also useful to us, because from honeybees we get honey and wax. We get honey and wax, and you like honey, isn't it? It is a sweet thing. So honey and wax are given by your honeybees, and we can get this honey and wax from the beehives. देखिए, ये honeybees है और ये उसके छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता. तो ये जो हनी और वैक्स है ये इसमें स्टोर रहते हैं. ठीक है, तो हमें जब भी हनी या वैक्स चाहिए होता है तो ये जो बी हाइव है इसे हम ब्रेक करते हैं, और उसके बाद उसमें से हमको हनी और वैक्स निकालना पड़ता है. ओके, सो यू हैव नाउ सीन दैट वी गेट मिल्क, we get egg, we get honey. So all these things are used as our food products, and these are very very nutritious food products. Okay, then you can see that we are talking about, you must have heard about the vegetarians and non-vegetarians. Okay, so vegetarians means the people who eat only the plant products. Okay, but non-vegetarian people are the people who eat the meat of animals like goat and chicken, as well as they eat sea animals such as your fish, crab and prawn.
ओके, सो नॉन वेजिटेरियन जो पीपल होते हैं वो लोग मीट एंड फिश दिस टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम. ओके, सो they are called as the non-vegetarian people. Now, next thing what we get from animal is animal gives us clothes. So that means what? You know that cotton cloth we wear is made up of cotton fiber. So cotton fibers we get it from our cotton plant, isn't it? But what the animal gives us clothes means which type of fiber we get from animal. So obviously it is the wool what we get from the sheep. तो आप देख सकते हो यहाँ पे शिप जो है ये शिप से ही हमें वुल मिलता है. और इस वुल का क्या यूज़ होता है? व्हेन इन विंटर सीजन यू नीड टू वेयर स्वेटर्स, यू हैव टू go for your woolen clothes, isn't it? So knitting is done and you get the sweaters. Okay, so how you are getting this wool is the fur of the sheep that grows on the body of the animals are cut and they are made into wool. ओके, सो ये जो आप शिप देख पा रहे हो इसके जो बॉडी हेयर्स है इसे क्या करते हैं? इसे शेव करते हैं और ये बॉडी हेयर्स को शेव करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद उसको हम वुल फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो वी मेक वुलन क्लोथ्स विद दिस वुल. Okay, so woolen clothes means your sweater, your jacket, what you wear during your winter season. Okay, now next thing what we get, which type of fiber we get from animal is the silk fiber. Okay, the silk fiber we get it from the silkworm. So you can see the silkworm here. Okay, so we get silk from cocoon of silkworm. It is a fine soft thread and is used to make silk cloth. So these cocoons are collected and they are processed to get the silk fibers. So you can see the silk thread, and from the silk thread the different types of क्लॉथ्स सिल्क क्लॉथ्स आर मेड. तो आपने सिल्क के साड़ी देखे होंगे, सिल्क के स्कार्फ देखे होंगे, सिल्क की कुर्तियाँ देखे होंगे. तो ये सब जो है वो सिल्क थ्रेड से बना होता है. तो सिल्क थ्रेड कैसा होता है? आपने देखा होगा कि वो ज़रा शाइनिंग टाइप का होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है. ओके, सो आप अपने मम्मी को बोलिए सिल्क के कपड़े आपको दिखाने के लिए, तो वो ज़रूर आपको सिल्क के कपड़े दिखाएगी. तो आपको पता चल के आएगा कि कॉटन कौन सा है और सिल्क कौन सा है. सो विच आर द डिफरेंट फाइबर्स यू गेट फ्रॉम एनिमल्स इज योर वुलन फाइबर एंड सिल्क फाइबर. Now the next thing we get from animals is your leather. We can get leather from the skin of dead animals like crocodile and snake. From leather we can make shoes, we can make jackets, we can make bags, and we can make belts. So you can see here shoes, belt, and gloves are there, isn't it? These are the gloves. Then jackets, isn't it? Then purses. All these things, whichever materials are made up of leather. लेदर से जो भी मटेरियल बना होता है वो लेदर कहाँ से मिलता है हमें? लेदर वी गेट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. लेदर हमें स्किन डेड एनिमल्स के स्किन से मिलता है. वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक crocodile and snake.
आपको पता है कि क्रोकोडाइल और स्नेक का जो स्किन होता है वो बहुत हार्ड होता है. सो बिकॉज यू हैव टू कीप योर products long lasting. For that you need a very thick skin, isn't it? तो इसीलिए crocodile और snake का skin usually we use it. We also use many animal skin also, but usually crocodile and snake skins are used to make the leather items. ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके जो क्लोथिंग है उसके लिए आपको जो सिल्क थ्रेड है, वुलन फाइबर है, यू आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स. वी ऑल्सो गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. इसीलिए एनिमल्स as gives you clothes. Okay, now next thing is from animal we also get manure and fuel. So manure means the nutrients which are useful for your field, isn't it? मैन्योर क्या होता है? जो कि हमारे सॉइल के लिए यूज़ होता है, सॉइल का न्यूट्रिशन है. तो वो किस तरह से सॉइल का न्यूट्रिशन हमें मिलता है एनिमल्स से? जब भी एनिमल्स के जो डंग रहते हैं, एनिमल्स जब पॉटी, एनिमल्स का जो पॉटी होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा गाय के और बफेलो के गोबर आपने देखा है ना. तो ये जो गोबर है ये क्या होता है, ये आपके सॉइल में absorb होता है और वो सॉइल से that soil becomes a nutritious soil, and this soil is very good for the growth of crops. Okay, then dried dung is also used as fuel. So you must have seen the cow dung which are dried. आपने देखा होगा जब आप गांव साइड जाते हैं तो गोबर को ऐसे लेप कर वो गोल गोल ऐसे पापड़ जैसे बनाते हैं, आपने देखा होगा, है ना. तो वो जो चीज़ें होते हैं उसको बोलते हैं ड्राइड काउ डंग. सो दैट थिंग इज़ यूज्ड फॉर एज ए फ्यूल. तो वो चीज़ वो लोग क्या करते हैं, चूल्हा जलाने के लिए वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि गांव में क्या, पहले के ज़माने में गांव में गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह नहीं थे, तो वो लोग उन चीज़ों से लाइक वुड, काउ डंग, these all things were used for your lighting up, isn't it? So जो किचन में लोग काम करते थे तो ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे. So animal gives us manure and fuel. Then animals are also helpful for growing crops. Animals are helping us to grow crops. How? Because farmers, you can see the farmers are using the animals for their plowing purpose. तो आप देख सक रहे हैं ये जो फार्मर है ये अपने खेती को प्लो कर रहा है और इसके लिए उसे एनिमल की हेल्प लेना ज़रूरी है. ठीक है, सो एनिमल्स सच एज ऑक्सन हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, प्लो आवर फील्ड्स एंड थ्रैश ग्रेन्स. तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि फार्मर क्या कर रहा है, अपने फील्ड को प्लो कर रहा है, ये इससे, है ना. उसके बाद दीज एनिमल्स आर यूज टू ड्रॉ वाटर. मीन्स जब उनके फील्ड में वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो पानी निकालने के लिए वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं. और उसके बाद फॉर थ्रैशिंग ग्रेन्स दे ऑल्सो यूज़ एनिमल. थ्रैशिंग ग्रेन्स मतलब जब क्रॉप को काटने के बाद उसे सुखाते हैं तो उसे भी थ्रैश करने, वो ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए भी एनिमल्स का यूज़ करते हैं. सो एनिमल्स इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू ग्रो क्रॉप्स. Then you know that animals are also used as a transport purpose.
सो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हम बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं. तो यू कैन सी द हॉर्स we use, isn't it, to go from one place to another place. So you can see here horse along with this vehicle. This is called as tonga. So tonga is useful to take the people from one place to another place. Then in your desert area, camels are also used to travel from one place to another place. Then camels, donkeys, horses, animals, elephants, all these things are used to carry loads as well. तो इन ये सभी animals along with elephants, ये एनिमल्स को हम लोड कैरी करने के लिए भी यूज़ करते हैं. Okay, so another name of these animals which are carrying loads are beasts of burden. तो जो एनिमल्स हमारे ट्रांसपोर्ट के काम में आता है और लोड को कैरी करने के काम में आता है, उनको हम क्या कहते हैं? बीस्ट्स ऑफ बर्डन. Okay, the other name for these animals are beast of burden. Now some more things we get from animals, like you can see feathers हम use करते हैं ना for decorating purpose. Then horns we are using. Hooves of some animals are used to make things. So you can see pillow filled with feathers. So feathers are used for decorating purpose. Then horn जो सींग रहते हैं ना, सींग, उसका भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो हार्ड रहता है. तो यू कैन सी थिंग्स मेड अप ऑफ हॉर्न्स एंड हूव्स मतलब वो जो इनका जो लेग्स रहते हैं उसके नीचे जो ये दिस थिंग्स कैन सी लेग्स के नीचे जो हार्ड रहता है ना चीज एनिमल्स के, देखिए ये ब्लैक थिंग्स, ये देख, these all things are used, these are the hooves and they are also used to make different things. So you can see a comb, you can see the different ornaments you can see. Then you can see these things which are used in your chess game में जो हम coins use करते हैं, ये these all things are made up of horns and hooves. So we have seen that animals are very much useful to us. They are giving us food, they are giving us clothes, they are giving us manure and fuel. We help animals to grow. We take help of animals to grow crops. Then animals are used as a means of transport. Along with that, animals are used for carrying loads. Then we can make different things from animals' feather, from their dead skin, or then their hooves and horns. We are using each and every part of the animal for making things which are useful to us. Then we will talk about the pet animals. Now you know that the pet animals are the animals that we keep usually at our home. So why these pet animals are kept? Because they become our great friend and they make us happy. So you know that dog, cat, fish and parrots are usually kept as pets in your home. तो ज़्यादातर आप देख सकते हो कि dogs, cats, पैरट्स एंड फिश, ये 4 चीज़ें ही हम यूजुअली एज ए पेट एनिमल हमारे घर पर रखते हैं. और क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारे अच्छे दोस्त होते हैं और हम इनको साथ में रख के हम भी खुश रहते हैं. ठीक है. नाउ you can see that these are the 2 pet animals which are usually kept by the people at their house. So you can see the dog
and the parrot, you have the different parts that are labeled for you, so you know the parts, isn't it? So the dog has eyes, nose, then ears, tongue, mouth, then neck, back, stomach, paws. Paws means that fingers, okay, and then legs, then it has a tail as well as, okay. So these are the different parts of the dog. And then you have the parrot. Parrot is a bird which has the parts like eyes, beak, face, body, wings, claws and tail, okay. So these are the pet animals which are shown to you along with their body parts. Now, you know that if you are keeping the pet animals at your house, you should take a very good care of this pet animals. आप यदि पेट एनिमल घर पर रखते हो तो आपको इन पेट एनिमल्स का बहुत ही अच्छा केयर लेना पड़ता है. Otherwise, if you are not able to take care of these pets, you should not keep the pets, okay. So let us see which are the different things, or which are the different ways you should take care of pets. So let us see which are this. We should look after our pets very well. Be kind to your pet, spend time with them. So whenever you are keeping pet, आप घर पे पेट रखते हो तो उसको आपको बहुत अच्छी तरह से उसके साथ रहना चाहिए. उसको आपको हार्म नहीं करना चाहिए और उसे आपको घर पर अकेला भी नहीं रखना चाहिए. सो यू शुड बी वेरी काइंड टू इट. आपको उसको हार्म नहीं करना चाहिए और हमेशा उसके साथ आपको टाइम भी स्पेंड करना चाहिए. और पेट जब आप रखते हो तो आपको उसे अच्छी तरह से गुड एंड हेल्दी फूड भी खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट हेल्दी रहेंगे और उनको भी कोई डिजीज़ नहीं होगा. एंड पेट जब आप रखते हो तो उसे टाइम टू टाइम खाना देना ज़रूरी है, ओके. देन ऑलवेज कीप देम क्लीन. उनको भी बाथ दिलाना ज़रूरी है, उनके हेयर्स को कोम करना ज़रूरी है. एंड कीप देम इन ए नीट एंड क्लीन शेल्टर. सो वेयर यू कीप देम, मतलब वो जहाँ पर आपने सपोज कोई डॉग कैनाल बनाया है तो उसे भी आपको नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है. और टाइम टू टाइम पेट्स को अच्छी तरह से चेकअप करने के लिए, जैसे कि उसे कोई बीमारी ना हो या कुछ उसको वो सिक ना हो, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम वेट डॉक्टर के पास. कौन से डॉक्टर के पास? वेट डॉक्टर, जो एनिमल का डॉक्टर होता है, उनके पास उनको चेकअप करने के लिए रेगुलरली लेकर जाना चाहिए. तो वेट डॉक्टर के पास आप रेगुलरली चेकअप के लिए जाओगे तो वो डॉक्टर आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे. तो उसके डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अपने पेट को अच्छी तरह टेक केयर कर सकते हो, ओके. सो these are all the points you should always keep in mind if you are keeping your pets, ओके. तो ये सब जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी को आप फॉलो करोगे तो आपका जो पेट होगा वो हेल्दी भी रहेगा और हैप्पी भी रहेगा, isn't it? If pets are happy, you can play with them, you can also be happy, okay. So you have learned in this chapter about the domestic animals, why we are keeping the domestic animals, and as well as your pet animals and why we are keeping pet animals, as well as how to take care of your pet animals, okay. With this we have completed the explanation of this chapter. Now we will move to the exercises.
Now you can see the first question is complete the flow chart. Things we get from animals. So what we are getting? Milk. Milk is the first thing what we get from animals. So किससे मिलता है? कौन से animal से? So write down buffalo, cow. Okay, they are giving us milk. Now second one, the animals are giving us eggs. So which are the birds which gives you egg? Are duck and hen. Write down that. Then seafood we are getting from crab, fish. Okay. Then leather from which animal we are getting? Crocodile. Now let us just complete our exercise. Complete the flow chart. The things we get from animals. So see here, milk we get from buffalo and cow. Eggs we get from duck and hen. Seafood from crab and fish. Then leather from the skin of crocodile and snake. Manure, that is the nutrient to soil, we get from the cow dung and buffalo dung. Okay, so we have written cow and buffalo. Then clothes, that is sheep, we get wool from sheep. You can write here wool from sheep, and silk from silkworm. Okay. Then means of transport, camel and horse. Fill in the blanks. We can make dash and dash from milk. So curd and butter. You can write cheese as well as. Dung of many animals is used as manure and fuel. We should get our pets checked by a vet, that is the animal doctor, when they are sick. Horses and camels are called beasts of burden. Then we get honey and wax from beehives. Now let us do the C part, that is the answer the following questions. Why do we keep pet animals? Write down the answer. We keep some animals as pets in our homes because they can become our great friends and make us happy. Now, which are the animals we keep as pet animals? Are dog, fish, parrots. Okay, so this is example: dog, fish, parrots. Next question. How do animals help us in growing crops? Animals such as oxen help us to draw water from wells, plow our fields and thrash grains. Question number 3. Who are non-vegetarians? Write down the answer. People who eat the meat of animals like goat and chicken, and also eat sea animals like fish, crab and prawn as seafood. Question number 4. Write 2 ways of taking care of pets. First, be kind to your pets. Spend time with them. Second, feed them well on time. Give them good and healthy food. Okay, so with this we
have finished with answer the following question part. Then we will move to the D part, that is label the parts of the pet animals. So see, I have labeled all the parts. You can also refer your lesson में आपको ये दोनों पेट एनिमल्स के पिक्चर दिए गए हैं और साथ में उनके पार्ट्स भी दिए गए हैं, तो आप उसे देखकर आप लिख सकते हैं. मैंने भी ऑलरेडी आपके लिए फिल कर दिया है बॉक्सेस को. ओके, now you have the fun time. Read the story and number it in the correct sequence. Okay, so you need to write the numbers in a correct sequence. तो सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी हुआ है वो हम पढ़ कर देखेंगे. ठीक है. रोहन finds a little puppy sleeping near his gate one morning. Rohan feeds the puppy milk and bread. After feeding, Rohan baths the puppy and cleans it. Rohan plays with the clean puppy. The puppy is happy. Then the puppy sleeps in his bed at night. Rohan brings the puppy inside the house. So what was the first thing Rohan did? Okay, so first Rohan finds a little puppy sleeping near his gate. So this will be your first. Then what he does? Rohan brings the puppy inside the house. Okay, then what he does? Rohan feeds the puppy milk and bread. So this will be the third one. Then after feeding, Rohan baths the puppy and cleans it. So after feeding, so this will be fourth. Rohan plays with the clean puppy. The puppy is happy. And then the puppy sleeps in his bed at night. So here okay, so like this you need to write the sequence. So सबसे पहले ये हुआ activity, फिर ये, फिर this one, then and the last one is puppy sleeps in his bed at night. So students, with this we complete off the chapter. Please go through the chapter, read the chapter nicely and then learn the answers. Thank you.